base is formed when carbonyl compound is treated with primary amine. It means आपने प्राइमरी अमीन ले ली, प्राइमरी अमीन एरोमेटिक ले लेते हैं. This is primary amine. Treat this with carbonyl compound. Acetaldehyde. What you will be getting is called, with the removal of water, is called Ship's base. This is Ship's base, or is called anil. Anil or Ship's base. शिप्स बेस अलग है और शिप्स रिएजेंट अलग है. शिप्स रिएजेंट इज रोजा एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड. रोजा एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड called Ship's reagent. This rosa aniline hydrogen chloride is pink in color. It is pink in color. And when this come in contact with sulfur dioxide, that sulfur dioxide act as bleaching agent, and this pink color is discharged and it become colorless. This become colorless. But when this is added with aldehyde, the pink color is regained, is regenerated. Yes or no? बट अगर इस एल्डिहाइड की जगह कीटोन डाला जाए तो कुछ नहीं होगा, नहीं कलर रीजनरेट होगा. किसके साथ? कीटोन के साथ. सो वी शुड से दिस इज अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स. After doing all this, we are into the nature of reaction of aromatic aldehydes, where we know that
This CO group is electron withdrawing group, showing minus R greater than minus I. Yes, no. Thus is meta directing, and this group is deactivating group. So इस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, क्या है? मेटा डायरेक्टिंग। इसलिए जब भी हम कोई भी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी मेटा एज फॉलो। तो आपके पास जो है वो एसिटोफिनॉन है, और ये एसिटोफिनॉन मैं ये जो अल्काइल ग्रुप है ये एसाइल ग्रुप है, दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसलिए अगर आपने इसकी ब्रोमिनेशन की at 273 Kelvin, but in the presence of FeBr3 और AlBr3, दोनों ही क्या है? लुईस एसिड। AlBr3 तो किया, पर ये जो है ये कैटालिटिक अमाउंट कितना लिया आपने? सिर्फ जितना कैटालाइज करने के लिए चाहिए था। पर अगर यही सेम रिएक्शन ब्रोमिनेशन but in presence of AlBr3 एक्सेस में करें तो क्या फर्क पड़ेगा? जहां वो कैटालिटिक अमाउंट है वहां वो Br पॉजिटिव नहीं बना पाएगा। Yes or no? So write in both cases what should be the product form. देखिए जब ये कैटालिटिक अमाउंट होगा तो ये Br पॉजिटिव नहीं बना पाएगा, और हम लोगों को पता है कि उसकी जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है वो एक्टिव होती है, जिस वजह से यहाँ जो है ये ऐसे ही रहा, रिंग की भी कोई रिएक्शन नहीं हुई, बल्कि वो जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है उसकी जगह Cl आ गया। यस और नो? प्लस बन गया Br आ गया, प्लस बन गया HBr,
और जो आप कह रहे हैं कि Cl कहाँ से आ गया, इसलिए कि मैंने यहाँ पर Cl2 लिया था। तो आप क्लोरीन लोगे तो Cl आएगा, ब्रोमीन लोगे तो Br आएगा। अगर आपने उधर क्लोरीन लिया है तो आप इधर भी क्लोरीन ले लीजिए, पर यहाँ AlBr3 है। जब यहाँ AlBr3 है तो AlBr3 उसके साथ क्या बना देगा, इस AlBr3Cl negative, and Cl will be positive, and this Cl positive will be directed by this deactivating group COCH3 to be at meta position. Yes or no? And we get metachloroacetophenol. ये जो यहाँ बना है, this is called phenacyl chloride, and this phenacyl chloride is used as lacrimator. लैक्रीमेटर का मतलब हुआ आंसू गैस की तरह। phenacyl chloride, ये जो phenacyl chloride है ये लैक्रीमेटर। यस, so this is lacrimator. और COCH3 कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, इसलिए वो उसको मेटा पोजीशन पे भेज देगा। आप उसकी नाइट्रेशन करोगे तो भी मेटा नाइट्रो बनेगा भाई। आपने नाइट्रेशन कर दी, सो यू विल बी गेटिंग मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉल। आपने उसकी सल्फोनेशन कर दी with H2SO4 SO3. SO3 is Lewis acid. SO3 is the one who is the electrophile. Thus we will be getting SO3H at the meta position. Is it okay? So this is how the electrophilic substitution of these carbonyl compounds that will take place. Next we having is, after doing this all, we are into carboxylic acid now. And what is the different category of carboxylic acid we having is, we having different categories as so different types of carboxylic acids. So let me start from the simplest one. We all know this is formic acid. Yes, no? Formic acid as being extracted from ants. Forma stands for ants.
Then you increase one carbon and this will become CH3COOH, whose IUPAC name is ethanoic acid, but commonly called acetic acid. Yes, no? Then we having CH3CH2 COOH, and this is called, IUPAC name is propanoic acid, but commonly called propionic acid. But don't get confused. There is one more acid like this, and that is propiolic acid. Propiolic acid is different. Propionic acid is this, but propiolic acid is this. When there will be triple bond. Then we having the butyric acid, whose common name will be butanoic acid. Yes, no? We having unsaturated acid like this. We having CH3 CH double bond CH CHO, जब हम यहाँ लिखते थे तो इसको बोलते थे क्रोटोन एल्डिहाइड. अगर मैं इसको बना दूँ COH, so this is crotonic acid. Crotonic acid. And if instead of writing this methyl, I write it phenyl, CH double bond CH, then is COOH, and this is cinnamic acid. Cinnamic acid. Yes or no? Clear हो गई बात? Then we having this if it would have been CN here, that is called acrylonitrile, but this is COOH, so it is called acrylic acid. So it's called acrylic acid. We having this is called Malese acid or malic acid, and its trans is called fumaric acid. Yes, no? We having
this diprotic acid, which we called oxalic acid. पर ये oxalic acid कहाँ से बना है? इस ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, as this is glycolic acid. Glycolic acid. अगर इसकी ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो ऊपर वाला अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल बी कॉल्ड ग्लायोक्सिलिक एसिड. यस नो? उस COH के बीच में एक CS2 डाल दिया, that is called malonic acid. That is called malonic acid. और अगर उसके बीच में दो COH डाल दिए that is called succinic acid. Yes. That is called succinic acid. एक CS2 और उसमें डाल दें, whose IPAC name will be pentane dioic acid. That is called glutaric acid. So दो कार्बन में तो हो गया सक्सिनिक एसिड. मैंने कहा कि आप इसमें 3 CS2 ग्रुप ले लें. This is called glutaric acid. और अगर एक CS2 और डाल दें, that is COOH, CH2, 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 and then is COH. This is called adipic acid. This is called adipic acid. Yes, no? And if they are present 8 CS2 groups, IUPAC name is decane dioic acid, but commonly called is sebacic acid, and this sebacic acid is used as monomer for polymerization to occur of nylon 610. अगर इसी के साथ हम इसके एरोमेटिक एसिड्स की बात भी करें, जिसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं, अगर उसकी
ऑर्थो पोजीशन पर OH हो तो इसको हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। इसको हम सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। और अगर इस OH की जगह NH2 हो तो इसको हम this is orthoamino benzoic acid, and if it's NH2 group having OCH3, दोनों को रिलेट कर रहा हूं ताकि नाम याद रहे। ये कौन है वैसे? एनिलीन। इसको मत देखो, ये कौन है? एनिसोल। So this is called anthranylic acid. And this is called anisic acid. अगर COH ग्रुप एक से ज़्यादा हो रिंग के ऊपर और वो ऑर्थो पोजीशन पर हो, दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड। When it is ortho, this is called thalic acid. When it is meta, is called isothalic. And when it is para, it is called terithalic. Tari? Yes, no. So this is the different types, different categories of the carboxylic acid. And as we know its method of preparation, we have done oxidation of alcohol. We already did that. I'm just taking over here that if you take toluene with single carbon and you treat it with oxidizing agent KMnO4, or you take any compound having any number of alkyl group here, am I right? That should be primary and secondary. The carbon primary secondary हुआ, इस टाइम वो मिथाइल है, इस टाइम ये प्राइमरी से सेकेंडरी हो गया। और अगर ये सेकेंडरी से टर्शरी हो जाए तो ये ऐसे हो गया, यस नो। बट
क्वाटरनरी नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वाटरनरी हो गया तो फिर क्या होगा? अगर ये क्वाटरनरी हुआ तो फिर क्या होगा कि जो आप अभी तक लिख रहे हो, that these oxidations are to be carried out in presence of KMnO4 who act as an oxidizing agent. Right? Aqueous KMnO4. You remember one thing, whether there are one carbon in that aliphatic group or there are so many carbons, this will only give acid of single carbon. And rest of the carbons, they will be converted to carbon dioxide. So you will be getting 6CO2 plus H2O. तो इससे हमें ये पता लगता है कि भाई तुम यहां जो मर्जी लेते रहो, you will get acid of single carbon provided that carbon should not be quaternary. If it will be quaternary carbon, this KMnO4 ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. Yes or no? This is the same thing that if you having orthoxylene and you treat this orthoxylene with KMnO4, that will lead to the oxidation of this orthoxylene into phthalic acid. Yes or no? Into phthalic acid. So metaxylene will form isophthalic acid and paraxylene will form terephthallic acid. So this is called isophthalic acid and paraxylene will be oxidized to terephthallic acid. Is it okay? We have already prepared carboxylic acid by hydrolysis of cyanide. We did the detailed mechanism. You can see the previous lectures for that. Next is ऑक्सीडेशन के बाद अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हुई, वी डिड कीटोन की ऑक्सीडेशन, पोपॉप्स रूल किया उधर हमने. एंड देन नाउ वी हैविंग वन रिएक्शन एंड दैट इज फॉर homologous.
and the name of the reaction is Arndt ester synthesis. This Arndt ester synthesis is used for the preparation of homology. Homologies differ by molar mass 14. मतलब इथेनोइक एसिड का होमोलॉगी इज प्रोपेनोइक एसिड, उसका इज ब्यूटेनोइक एसिड एंड सो ऑन. Yes or no? So let us take we having propanoic acid. To this propanoic acid, we have already prepared acid chloride by this method in the previous lecture. There will be removal of HCl. There will be evolution of HCl gas and SO2 gas, and you will be getting, and this was occurring in the presence of pyridine, and you will be getting acid chloride. Is it okay? To this acid chloride, you add diazomethane. Diazo. Diazo मतलब 2N. Diazomethane. N की वैलेंसी बीच में कितनी हो गई बेटा? 4 पॉजिटिव चार्ज. यहाँ कितनी हो गई? 2 नेगेटिव चार्ज. यस सर. So this hydrogen is like acidic hydrogen. So this will be going, and there will be a negative charge on this, and that will attack over here. So what you will be getting is CH3, CS2, CO minus HCl, and this is CH negative. इसी के ऊपर था double bond N, and this is negative, this is positive. Is it okay? Now you just see here, आप देखिए कि यहाँ है क्या. यहाँ क्या है is that this negative will go here and this will go here. Yes, no? And then should I do in single step या 2 स्टेप में करूं? एक बार 2 स्टेप में करता हूं क्योंकि आगे 4-5 रिएक्शन में सेम मैकेनिज्म यूज होना है. It means this CH got negative charge, N triple bond N, one N got neutralized, 3 valency, but the another N is with positive charge. Am I right? Let's just see here. This bond will shift here. It means there will be evolution of nitrogen gas. और वो CH जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया क्योंकि उसको मिला था और फिर ले लिया गया. इसका मतलब हुआ ना मिला ना लिया. समझ रहे हो? It means this CH is carbene, but साथ में कौन सा ग्रुप है? CO. So this is called acyl carbene. This acyl carbene इसके बाद आप कुछ देखिए, ये चीज आगे बहुत जगह होनी है.
वो क्या है जरा ध्यान दो. This will go here and C will become pentavalent. Yes or no? So this CH3 will go here. And you will be getting CH3, CH2, CH, double bond, C, double bond O. Is it not? Yes or no? And this rearrangement is called Wolff rearrangement. Yes, no. And this is, what is this? Ketene. Double bond. You hydrolyze it. Hydrolyze matlab water डालो. What will happen? This will go here. Am I right? So जब आप water डालोगे तो आपके पास CH डबल बॉन्ड C, इधर भी क्या आ गया OH और इधर भी क्या आ गया OH. Don't you think this is enol? And this enol will tautomerize to form carboxylic acid. 1, 2, 3. 1, 3 hydrogen shell. No. Do you like this? This will go here. This will go here. CH will get negative charge, hence H positive will attack on it. So what you will be getting is it not that you are getting butyric acid? So from where you started? Propionic acid. And you are able to get butyric acid. It means it's immediate homology. So that's what we are saying, that this reaction is used for the preparation of homologous carboxylic acid, and homologies, they differ in the molar mass of 14. CH2 matlab 14. So this is Arndt ester synthesis. इससे हमने क्या किया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हम कहां चले गए, ऊपर चले गए. The next carboxylic acid. Next, अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, चाहे वो छोटे से छोटा एसिड है, हमने कहा था कि फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर उस लिहाज से देखा जाए. और कार्बोक्सिलिक एसिड से नेक्स्ट हमने कहा था फिनोल. यस नो. उसके नेक्स्ट हमने कहा था अल्कोहल, और फिर कहा था एल्काइन. दिस वॉज द जनरल ट्रेंड. दिस वॉज द जनरल ट्रेंड ऑफ द acidic strain. It means this is the decreasing order of acidic strength from here to here, or from here to here it is increasing order. Yes, no.
So we know that this carboxylic acid is strong acid, but phenol is not. So phenol, when treated with sodium carbonate, sodium bicarbonate, who are weak bases. But phenol itself is also not strong acid. So there is no reaction. Except the phenol derivative, where phenol is loaded with very strong electron withdrawing groups. That is picric acid. This reaction will do occur because it is a strong acid. It means if carboxylic acid is stronger than phenol, so let us take any carboxylic acid, maybe formic. Formic acid is the most reactive. And let us treat it with NaHCO3. Yes, no? So there will be formation of RCOO, Na plus CO2 plus H2. का मतलब क्या हो गया कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वो रिएक्शन दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि ठीक है वो तो वीक बेस है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड है. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज whose carbon is there in carbon dioxide? The question is, whose carbon is this? क्या ये कार्बन उस कार्बोक्सिलिक एसिड का है या ये कार्बन बाइकार्बोनेट का है? अगर ये कार्बन, let us take हम इस कार्बन इसको डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्निक होती है, दैट इज रेडियो एक्टिव टेक्निक. उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया जाता है और फिर हमें पता लगता है कि वो कहाँ जैसे है. सो व्हाट वी डिड इज वी टुक दिस सोडियम बाइकार्बोनेट एंड दिस कार्बन इज द रेडियो एक्टिव कार्बन. तो अब आप खुद बनाइए, पहले इनका स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद आगे की बात करते हैं. RCOH तो जैसा है वैसा ही है. यस नो. पर NaHCO3 कैसा है ये बताओ. क्या ये कार्बोनिक एसिड से नहीं बना है? इज इट नॉट NaHCO3? व्हाट डू यू थिंक? आप याद करो वो दिन जब मैंने कहा था दैट द मेटल आयन शुड ऑलवेज रिमेन विद द कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास RCOOH है और आपके पास कार्बोनिक एसिड है, दैट इज HCOOH, where lies the difference? The difference is here. Yes, no? इसका मतलब जिसका रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा होगा भाई उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. तो R का इफेक्ट क्या है? प्लस I. What about the effect of OH? Plus R. So who do you think is stronger acid? Carboxylic acid or carbonic acid? Car? Means releasing group they increase the acidic strength. फिर क्या बोल रहे हो? There is plus I effect, there is plus R effect. This gives indication that yes, क्या
Carboxylic acid is stronger acid than carbonic acid. It means the metal ion should rearrange itself. Why it should rearrange itself? क्योंकि मेटल आयन को स्टेबल कॉन्जुगेट बेस के साथ रहना चाहिए, और जब वो रीअरेंज हुआ ये समझो कि हमारा आंसर आ गया। सोडियम इधर आ गया और वहां बन गया कार्बोनिक एसिड। यस सर। And this is the carbonic acid, where two hydroxide present on the same carbon. Hence this will go here, this will go here, H2O plus CO2. इट मीन्स जो बाइकार्बोनेट का CO2 था वो कार्बन 14 था। दिस इज कार्बन 14, दिस इज कार्बन 14, दिस इज कार्बन 14, दिस इज कार्बन 14, दिस इज कार्बन 14। Hence the answer is that CO2 is coming from bicarbonate. Is it okay? चलिए नेक्स्ट। The next is, we have already done nature of reaction of carbonyl compound. Along with that, we also did the nature of reaction of acid derivatives. We did that the nature of reaction is nucleophilic substitution reaction. And when it is nucleophilic substitution reaction, then obviously उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो अटैक करने वाला होगा वो उस पर सबसे जल्दी अटैक करेगा जिसकी कार्बन से कोई विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। इसलिए हमने कहा था कि नेचर ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेचर ऑफ reactions of acid derivative. और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है भाई, तो जो उस कार्बन को सबसे ज्यादा डेफिशिएंट बनाएगा वहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट होगी, अच्छी होगी। इसलिए हमने कह दिया कि हमारे पास द मोस्ट रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव इज एसिड हैलाइड, HCl is a good living group. Also, next to acid halide we having is acid anhydride. Next to acid anhydride we having is ester. And next to ester we having is acid amine. Yes, no? This is the decreasing order of nucleophilic substitution.
यस, नो। और दूसरा फैक्टर ये तो हो गया कि भाई इसका इफेक्ट क्या है, माइनस आई डोमिनेटिंग ओवर प्लस आर, दिस इज प्लस आर डोमिनेटिंग ओवर माइनस आई, बट इस ग्रुप का इफेक्ट भी माइनस आर है। यस सर। इस ग्रुप का इफेक्ट जो है वो प्लस आर है, डोमिनेटिंग ओवर माइनस आर। यस, दिस इज प्लस आर डोमिनेटिंग ओवर minus I, and plus R of NH2 is more than plus R of O. The second factor which is there is the living group tendency. Living group टेंडेंसी। लिविंग ग्रुप आपको बताया गया था कि जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वो पुअर लिविंग ग्रुप है। तो यहां कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इज HCl। HCl का कॉन्जुगेट बेस इज Cl नेगेटिव, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट एसिड इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन है, इज एसिटेट। नेक्स्ट एसिड इज अल्कोहल। अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस कौन है, इज RO नेगेटिव। नेक्स्ट एसिड इज अमोनिया। अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस कौन है, इज NH2। सो NH2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, सो इज द वीकेस्ट लिविंग ग्रुप। तो इस साइड को क्या हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ, और इस साइड को क्या हो रहा है, ये कॉन्जुगेट बेस जिसका सबसे इस साइड को क्या हो रहा है, इस लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। यस और नो। So this is all about carboxylic acid.